very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting in the face of the police or whoever's in front of them, if they're punching people, if they're doing all of the things that you see done for the last 3 nights, that I would say is engagement. We need to keep our city straight. I want to save Los Angeles. And Newsom is totally incompetent. He's not going to do it. Look at the fires he had. There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know a lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. Thank you very much. ये ऐसे काम मजदूरी करते और क्या। और परिवार में उसके कौन-कौन था? परिवार मम्मी पापा एक और भाई था। आपने कब किराए पे दिया था? 4-5 साल से रह रहा अपने इधर ही। कभी ऐसा व्यवहार लगा उसका कि बदमाश है, गुंडा है या नहीं लड़ाई लगा? नहीं, उसका बिल्कुल भी नहीं लगा। ये जो हत्या में सामने नाम आया है इसका, जी, आपको कब मालूम पड़ा? जी अभी परसों ही के दिन पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कर सकता है? हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, वो अभी तक ऐसा इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए अपने इधर रहता, अभी कभी नहीं लगा माने ऐसा कि ऐसा निकले कि ऐसा होए, कुछ भी कर सकता है। कहाँ के रहने वाले? वो बीना साइड। बीना से? हाँ। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा भाई। भाई क्या करता है? भाई भी यही मजदूरी करते हैं। छोटा बड़ा? बड़ा है। तो ये लोग कहाँ गए हैं? अभी गांव है। कौन से? वही बीना उधर। हाँ। क्यों चले गए लोग? वो उनके इधर कुछ कार्यक्रम था, उनके घर में परिवार है तो इसलिए गए थे वो। हाँ। तो पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी। कब आई थी? कल आए थे। क्या बोले पुलिस वाले? यही पूछ रहे थे कि कहाँ रहता है आनंद। हाँ, तो हमने बोल दिया कि इधर ही किराए से रहता मकान मालिक, यही पूछ रहे थे। अभी मकान पे ताला है? हाँ, अभी ताला लगा। चाबी कौन लगा के गया ताला? चाबी तो हमारे इधर रखी है। अच्छा। हाँ। तो ताला जब लगा के जाता था आपको देखा? नहीं, अभी तो बहुत दिन से गए ना गाँव, तो उस आनंद बाहर कब गया था, कितने दिन के लिए गया था? आनंद अभी हो गए 20-25 दिन हो गए होंगे। कहाँ गया था? ये तो बोल के गया था कि घूमने जा रहा है। कहाँ पर? अब ये नहीं बताया अपन को मालूम। तारीख को गया था और कितने दिन में आया? ये तारीख का नहीं मालूम। कितने दिन में आया था वापस लौट? ये 7-8 दिन में आ गया था। 7-8 दिन बाद आया? हाँ। अच्छा, और भी कोई आता था उसके घर पे? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं, अपने घर पे कोई भी नहीं, अपन नहीं किसी को आने देते। 7-8 दिन के लिए बाहर जब गया था, हाँ, तो वापस आया तो कुछ उसका हाव भाव बदला हुआ नजर आया? कुछ भी नहीं आया उसका बदलाव। हाँ, माने अच्छा गया था, पूछा के घूमे आए, बोले हाँ घूमे। नहीं, अपन ने को नहीं बताया अपन ने। हाँ। Very good progress is happening with the EU. I've had 3 rounds of discussions at ministerial level between 1st May to 3rd of June. In 34-35 days, we have met thrice. My counterpart Maros Sharkovich is coming down to India on 28th and 29th of June for possibly about the last or second last round of discussions. Our teams are discussing from 16th onwards in Delhi. A round is going on. We have intersessional rounds through video conferencing. Very, very active negotiations are underway. With Oman, we have made significant progress. New Zealand is very keen to conclude quickly. We have a bandwidth problem. The Commerce Ministry is overstretched. We are working with the United States to meet the commitment given to our two leaders, President Trump and Prime Minister Modi, to have a bilateral trade agreement tranche 1 by fall, that is by September 2025. Discussions with Peru and Chile are progressing well. So effectively the ministry is completely today engaged with discussions with all continents across the world. बहुत अच्छे दर्शन हुए जनाब, और हमें उम्मीद है जो हमने मांगा है वो पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि अमन हो, तरक्की हो, भाईचारा हो और हम लोग आगे बढ़ सकें, भारत आगे बढ़े और हम सब उसकी तरक्की में आए। कल आप हाथी में बैठे, कितना खुशी हो रही है आपको हाथी में बैठे? बहुत खुशी हुई मुझे कि इस ट्रेन में भी आके जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नया कदम है, जिससे हम समझते हैं कि न सिर्फ माता की यात्रा के लोग बहुत आएंगे, बल्कि बहुत से लोग अब भोलेनाथ की यात्रा के लिए भी आएंगे और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा।
Do you feel nostalgic whenever you come to Delhi? Any Yes. special Delhi memory you have? Well, Delhi is a city where I've spent my childhood, while Bombay is the place where Gauri Khan Designs was born. So both cities are equally important for me. Speaking of the experience center, what was your vision behind creating this experience center? Well, the idea was to create something immersive. I wanted to feel like a home where you can have a walk through and touch and feel and have an experience of Gauri Khan Designs. Every piece, every corner is designed to spark emotion and inspire imagination. According to you, what are the main highlights of the center? The lifestyle zones really stand out as they allow one to see how the pieces fit into the real setting. And it's not just about showcasing furniture, it's also about creating stories through the space. Especially our customized furniture. It brings in freedom to co-create with clients. Also, Gauri, design can mean many things to many people. What does it mean personally to you? Well, design should reflect who you are and evolve with you over time. And as a designer, what is the most important thing that crosses your mind before starting any project? I would say the first thing is understanding what the client needs, client story, their lifestyle. I think every project needs to feel authentic. You need to have people who will live in and to see how they want to live in a good life. Well, every project needs to feel authentic to the people who will live in. Also, any tips you would like to share for budding designers? Be true to your instincts and don't get lost in trends. Good design is timeless and your individuality is your biggest strength. Absolutely. And what's the idea behind the Eminent collab? Can you share details about design aesthetics? I think lighting brings in sculptural elegance, drama to a space. It aligns with beautiful spaces with my design sensibility. Eminent lights elevate the atmosphere without overpowering it. This collaboration felt like a very natural extension of my design language. Immersive, emotive, timeless. A very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting in the face of the police or whoever's in front of them, if they're punching people, if they're doing all of the things that you see done for the last 3 nights, that I would say is engagement. We need to keep our city straight. I want to save Los Angeles. And Newsom is totally incompetent. He's not going to do it. Look at the fires he had. There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know. A lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. Thank you very much. Nestled in the lush hills of Tamenglong, Manipur's Naga heartland, Jawahar Navodaya Vidyalaya shines as a beacon of opportunity for bright, underprivileged students. Affiliated with CBSE and home to over 500 students, the school blends academics with multicultural values, patriotism, and multilingual learning. Spread across 30 acres, the campus features smart classrooms, hostels, a library, and staff quarters. With teachers from across India,
The co-ed school fosters equality, diversity, and all-round development. The facilities are very good. We get free books, free uniforms, free food. We even stayed in boarding for free. We studied for free. And about the teachers are very qualified. They are from different states. They get us many knowledge about speaking Hindi, English, etc. Beyond books, the school sparks hands-on learning in science labs and fuels creativity through art and crafts. Here, every child is inspired to dream big, whether in science or the arts. I want to become an amateur astronomer when I grow up because I'm inspired to discover new things in the galaxies. There's a lot of blank spaces there left in the universe. That's why I want to discover it, and that's the reason why I want to become an astronomer. And for that, for achieving my goal, I would have to go to ISRO, one of the biggest organization in India. Setting up a quality school in remote Tamenglong is a commendable educational step. With facilities on par with top schools in metropolitans, the administration is grateful to the government. We are very much grateful to the government of India for giving us such a excellent, par excellence school for children who are deprived of facility. Jawahar Navodaya Vidyalaya in Tamenglong continues to empower young minds, bridging dreams with opportunity and paving the way for a brighter, more educated future in this Naga majority region. The facilities are very good. We get free books, free uniforms, free food. We even stayed in boarding for free. We studied for free. And about the teachers are very qualified. They are from different states. They get us many knowledge about speaking Hindi, English, etc. I want to become an amateur astronomer when I grow up because I'm inspired to discover new things in the galaxies. There's a lot of blank spaces there left in the universe. That's why I want to discover it, and that's the reason why I want to become an astronomer. And for that, for achieving my goal, I would have to go to ISRO, one of the biggest organization in India. We are very much grateful to the government of India for giving us such a excellent, par excellence school for children who are deprived of facility. I wanted to let the city know that I have declared a local emergency and issued a curfew for downtown Los Angeles to stop the vandalism, to stop the looting. Many businesses have now been affected by or vandalized. Last night there were 23 businesses that were looted, and I think that if you drive through downtown LA, the graffiti is everywhere and has caused significant damages to businesses and a number of properties. So my message to you is, if you do not live or work in downtown LA, avoid the area. Law enforcement will arrest individuals who break the curfew, and you will be prosecuted. Hundreds of officers from police and sheriff departments from across the region and state are working alongside LAPD through a unified command structure. The curfew will be in place tonight from 8 p.m. until 6 a.m. We have reached a framework to implement the Geneva Consensus and the call between the two presidents, right? So that was on June 5th. So we've combined those two. We've reached a framework for implementation. Now the process will be, we're both going to go back
we, Ambassador Greer, myself, and Scott Bessent, who just left a little earlier, which you saw, because he's testifying tomorrow on the Hill. So the idea is we're going to go back and speak to President Trump and make sure he approves it. They are going to go back and speak to President Xi and make sure he approves it. And if that is approved, we will then implement the framework that we have worked hard over these last 2 days. Obviously, the team stayed at it until it was done late into the evening. Well, that was a topic of discussion for specialists here, right? Each side had specialists to talk about fentanyl. Clearly, that's a priority for our president, and frankly, for all Americans, right? This is not a partisan issue. We would expect to see progress from the Chinese on that issue in a major way. We do absolutely expect that the topic of rare earth minerals and magnets with respect to the United States of America will be resolved in this framework implementation. That is a fundamental part of that. Also, there were a number of measures the United States of America put on when those rare earths were not coming. You should expect those to come off sort of, as President Trump said, in a balanced way. When they approve the licenses, then you should expect that our export implementation will come down as well. The two sides have, in principle, reached a framework for implementing the consensus reached by the two heads of state during the phone call on June 5th and the consensus reached at the Geneva meeting. The two sides will report the status of the talks and the implementation framework to their respective leaders. राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपी जो 4 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किए गए थे उनको मेघालय पुलिस देखिए लेकर के आ रही है। ये मेघालय पुलिस गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उनको लाया गया है। पहले एक आरोपी को रखा गया है। देखिए 2 गाड़ियां लगाई गई हैं, दोनों गाड़ियों में ही आरोपी रखे गए हैं। इनको ले जाया जा रहा है आज शिलांग। भारी सुरक्षा के बीच में सभी के चेहरे छुपाए गए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से चेहरे छुपाए गए हैं। और ये एक आरोपी को आगे की बोलेरो गाड़ी में मेघालय पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कोई चीज नहीं करना चाहती, लिहाजा इसको लेकर के जो देखिए ये गाड़ी ये निकली है। People have asked me, what are the Marines going to do when they get here? That's a good question. I have no idea. The National Guard that are here now have one assignment, and that is to protect one building, which is the federal building downtown. The second building, which is the federal building on Westwood Boulevard. And as far as I know, nothing has happened in Westwood at all. So this was not needed. The idea that the administration would usurp the authority of our state government, take it away from our governor, Gavin Newsom. The governor knows that if we put a request in
for the National Guard and it went to him, he would comply. There was never an issue there because we were never thinking about calling upon. The conditions of disorientation are avoided. See, basically, you have, it's almost like in a civil aircraft, you have a captain and a co-pilot. Okay. Now, in this case also, since Sudhanshu is a test pilot, he's an experienced test pilot, and so he, along with the American, I think her name is Miss Peggy, unka naam hai, and she's a veteran astronaut. She has already, I think, stayed over 500 days in space and done many missions. But in case of, let's say, if the autonomous system does not work or if there is a glitch, then they have to take over manually to dock the spacecraft with the International Space Station. So basically, ये है इनका. And once he is up there, so he is going to be very busy carrying out a lot of experiments which he has been tasked to do. I think this is, I would call it like a stepping stone to our own mission, which is going to take place perhaps next year. मगर मेरा आज यहाँ आने का खास मकसद ये था कि अमरनाथ जी की यात्रा आने वाली है, इसलिए मैंने जो अमरनाथ यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया था, उनको ये बताया कि जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी रखवाली यहाँ के लोगों ने करनी है, पहलगाम के लोगों ने करनी है, ताकि ये यात्रा अच्छी तरह गुजरे और उसके बाद लोगों को एतमाद दोबारा बहाल हो जाए और टूरिज्म दोबारा शुरू हो जाए। इसके साथ साथ मैंने गुजारिश की यहाँ की सरकार से और गवर्नर साहब से कि ये जो पहलगाम में आपने पार्क्स बंद करके रखे हैं, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ो बंद है, बेता वैली बंद है, इसको खोल दीजिए ताकि जो कश्मीर के लोकल टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो इन जगहों पे जा सके और यहाँ के लोगों की, घोड़े वाले की, टैक्सी वाले की, होटल वाले की कोई कमाई हो सके, क्योंकि ये बैंक के कर्जों में डूबे हुए हैं। इसके साथ मेरी गुजारिश है, श्राइन बोर्ड के जो इंतजाम देखते हैं कि आपने बोला है एक आदमी सिर्फ एक घोड़ा लाएगा, यहाँ हर पहलगाम में घोड़े वाले के पास एक आदमी के पास 2 से ज्यादा घोड़े हैं, इसको आप तब्दील कर लीजिए, जिसके पास जितने घोड़े हैं उसको उतना घोड़ा इस यात्रा में लाने की इजाजत दीजिए। और दूसरा, हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आ जाए, जैसे सैकड़ों सालों से कश्मीरी लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है, इंशाअल्लाह इस साल भी इस्तेकबाल होगा, उनकी भरपूर खिदमत की जाएगी और वो बिल्कुल सेहतो सही सलामत वहाँ से भी आएंगे और यहाँ से भी वापस जाएंगे। हियरिंग में एक्चुअली हरियाणा पुलिस आए थे, उन लोग का रिमांड लेके। असम पुलिस आज सिर्फ इसको वॉच करने के लिए आए थे, तो अकॉर्डिंगली उन लोगों ने अपना सबमिशन कोर्ट में दिया है, उन लोग का प्रेयर जो था उन लोगों ने कोर्ट में दिया है और अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन व्हाट वाज एलिजेड टू बी अपॉन वजाहत खान वो दिया गया है, बट कोर्ट ने उनका बेल प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया कि हम लोगों ने बेल प्रेयर किया था उनके लिए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑपोजिट पार्टी का उन लोग का प्रेयर था 20 तारीख का पीसी का रिमांड के लिए, बट उसको 16 तारीख तक का दिया गया है। अभी तक तो यही है। We have started our preparation since March last week, and various measures have been taken, like the dietary regulations or dietary changes which
was the first, you can say, the first parameters which what we are doing. All the herbivores as well as the birds has been shifted to the diet which contains more water content, like seasonal fruits, vegetables, and less fat content. At the same time, all the coolers, all the sprinklers, all the water ponds are fully repaired and fully functional, so that the microclimate of the enclosure and where the animal live in the night or stay most of the time are become cool. The news hit me to the core this morning. The death of innocent children is the worst thing that can happen to a family or a community. My thoughts today are with the families of the deceased, the injured, and their friends and relatives. Schools are symbols of hope, future, and youth. It is infinitely difficult to bear when schools become places of violence and death. Today, I mourn with Austria, and I thank all the helpers and emergency services in these difficult hours. जिस तरह से गढ़चिरौली में ऑपरेशन नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से उसको देखते हैं, क्या रोल प्ले कर रहा है एनर्जी? पहले भी ऐसे ऑपरेशंस में एनर्जी ने रोल प्ले किया हुआ है। देखिए, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में स्टेट पुलिस लीड एजेंसी होती है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारा स्किल सेट, एनर्जी का स्किल सेट लिमिटेड स्किल सेट है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन जब भी करते हैं तो हमारे ऑपरेशन सटीक होते हैं। अगर सॉलिड इंटेलिजेंस हो तो हम लोग को अगर बुलाया जाता है तो हम उनमें ऑपरेट करते हैं। नक्सल विरोधी अभियान में हम सीख भी रहे हैं। हमारे हथियार, वो जो इस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑपरेशन करेंगे। इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पे आज रखा गया है, 2 दिन का सेमिनार है। किस तरह की चीजें सीखने को मिल रही हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम नया सीख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में एनर्जी किस तरह से तैयारी अपनी प्रिपेयर कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने का? देखिए, इंटरनेशनल सेमिनार हम लोगों का ये 23वां इंटरनेशनल सेमिनार है। हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि मित्र देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे कि हम उनसे सीख सके कि वो किस तरह से टेररिज्म को डील करते हैं, और हम उनके केस स्टडीज़ को एग्जामिन करें, उनके जो वेपन्स हैं उसके बारे में देखें, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें। यही मुद्दा है कि सिनर्जी डेवलप कर पाए। जैसा कि चारों आरोपियों को आज शिलोंग पुलिस इंदौर से गुवाहाटी के लिए लेकर निकली है। इंदौर एयरपोर्ट से भी वो रवाना हुए हैं। वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट से गुवाहाटी पहुंचेंगे, वहां से शिलोंग पहुंचेंगे। वहाँ फिर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, वहाँ से वो पुलिस रिमांड प्राप्त करके आगे की फिर पूछताछ वहाँ होगी। सोनम की बात आ रही है कि वो इंदौर आई थी सर, यहाँ पर रुकी भी थी बाकायदा, फिर यहाँ से गाजीपुर गई है, क्या कुछ ये सामने आया? ये इस संबंध में चूंकि अगर ये चीज़ आई है तो सोनम ने अगर स्वीकार किया है कि चूंकि सोनम से शिलांग पुलिस बातचीत कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है सोनम से, तो उस संबंध में अगर ऐसी चीज है तो वही बता पाएंगे शिलांग। सोनम यहाँ पर आपको पता चला, सहायता करी आपने? नहीं, हमें ये पुख्ता नहीं हुआ है कि वो इंदौर आई थी, वो जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। तो शिलांग पुलिस ने बताया है तो बिल्कुल, अगर सोनम ने बताया तो आई होगी। अगर आपको ऑफिशियली अगर उन्होंने बताया तो आई होगी, और उसकी अगर तस्दीक के लिए वो आएंगे, अगर लगेगा पुलिस को, शिलांग पुलिस को कि यहाँ से इंदौर से संबंधित कुछ तथ्य हैं सोनम से संबंधित, तो सोनम को लेकर पुलिस इंदौर भी आएगी। सर, क्या बरामदगी हुई है? क्या कुछ बरामद? जैसा कि आरोपी जो विशाल है, उसके घर से आज जो घटना दिनांक को जो उसने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने जब्त किए हैं, और वो उनको फिर वहाँ की पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, जिससे कि पता चल जाए कोई मृतक के ब्लड के कुछ स्ट्रेन्स वगैरह कुछ हैं तो वो वेरीफाई हो जाए। सर, और भी आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 4 लोग तो थे ही, लेकिन वो गाजीपुर कहते गए, क्या और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, यूपी के लोगों ने भी सहायता करी है या अन्य राज्यों में, यहाँ के एमपी के? ये वही बता रहा हूँ, ये विवेचना का पार्ट है, अब विवेचना जारी है अभी, उसमें सारी चीजें और क्लियर होके आएंगी। अगर इन 4-5 लोगों के अलावा कोई और भी है जिसने मदद की है किसी प्रकार से, अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको शिलांग पुलिस अपनी विवेचना में लेंगे। लालू यादव
नहीं ट्वीट करते हैं, उनका असिस्टेंट सब है, वो लिख के ट्वीट करता है। लालू जी कहाँ ट्वीट करते हैं? लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी कि अगर कोई बूढ़ा शेर आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? अरे भाई, तो हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बिहार की जनता के सामने है, जनता उसको देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं। और नीतीश कुमार का क्या दुर्दशा है वो जनता बता रही है। सब टाटा बाय बाय बोल दिया। किसी भी गांव में हम हाथ उठा के पूछते भैया नीतीश को रखना है कि हटाना है, 100% आदमी कह रहा है कि हटाना है। और वहाँ मंत्रालय में बैठ के लूटने वाला सब उगाही मंत्री सब जो बिहार की जनता को लूट रहा है वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा कि हम लोग का ही अच्छा चलेगा। तब मंत्री पद छोड़ दे। अब बिहार में क्राइम के खिलाफ में खासकर दलित परिवार के, अभी तो दलित परिवार के बच्चे के साथ इतना विभत्स बलात्कार हुआ, रेप हुआ। जीतन राम मांझी कहाँ थे? बैठे हुए हैं केंद्र सरकार के में मंत्री बन के। और गोलीबारी हो रही है सर, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम है, स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और आप ये बताइए, मैं किसी बात पर आरोप लगाता हूँ तो कहता है मानहानि का दावा करेंगे। हम आपको कह रहे भाई हम पर मानहानि का केस करो। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे हैं दिमाग उनका ठीक नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं। अगर आपको हमारी बात ठीक नहीं लग रही है तो हम पर केस कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि उनका मानसिक हालत क्या है। सुनिए, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिस व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उस आदमी को आपने 13 करोड़ लोगों का मुखिया बना दिया है। बिहार में गरीब परिवार का बच्चा सिपाही बनता है, उसका मेडिकल जांच होता है। आई 13 करोड़ आदमी का मुखिया, इसको दिमाग नहीं काम कर रहा नीतीश कुमार का, फिर भी उसी को भाजपा वाले थोपे हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।